Okay, on the right side we have the channel box. In this channel box you have the polygon cube inputs. In the inputs you can adjust the width, height and depth of any of the object. Okay, next, subdivisions width, then subdivisions width, subdivisions height, subdivisions depth. Okay, like this we have created a Rubik's cube. ठीक है, Rubik's cube हमने create किया था इस तरीके से. When you right click on any of the object, you will get long press right click. ठीक है, long press right click, you will get different types of options available. ठीक है, vertex, edge, जो भी options रहेंगे, you will get those options. See, adjust the vertex, next the edge, vertex, edge and next is face. Okay, you can move, you can scale and then you can also rotate it. Okay, so these are some of the editing options. Next also I have shown you the extrude option. Okay, extrude option from the shelf to extrude the selected part, to remove or to pull out the selected part. Okay, उसके लिए क्या करना है आपको? You have to select the face and then here is the option of extruding. Okay, extrude, you will have thickness, axis, offset. Okay, and divisions. How many divisions you want on the extruded part? Okay, how many divisions you need on the extruded part? You have to say that, you have to check that. Okay, like this you can create different types of models. You can edit different types of models. Okay, Control Z. I will increase the undo levels. Okay, to increase the undo levels, go for Windows, settings and preferences. In this you will get the undo option. यहाँ पे क्या है? On infinite save. You have to click on this. ठीक है? So if you want to select multiple elements, okay, these are multiple face elements. I am selecting. Press Shift. Okay, Shift is the shortcut for selecting the multiple face elements. Then you can extrude it in a group. Okay, thickness, axis, offset, divisions. How many divisions you need? ठीक है, divisions अगर आपको adjust करना है, you can adjust it. ठीक है, keep faces together. ठीक है, उसके नाम के अंदर ही meaning है keep faces together. I don't want the faces to be together, so I will do it off. So it will extrude all of the faces separately. Okay, so you will get this type of output. But I want this option to be applied on all of the faces. So I will drag and select the whole object and I will extrude it. I will give the thickness off and then offset. Okay, now my Rubik's Cube model is ready. Okay, clear with this? Anyone have any problem in this? All of the tools are clear? Tools clear है सबको ये? Okay. Now next, इसी Rubik's Cube का आपको क्या करना है? Now you have to color it. ठीक है? You have to add different types of color on this Rubik's Cube. Now I will just tell you one short term key. Just let me know
Okay, just let me know what is the difference between material and texture. Can anyone guess? ठीक है, अगर किसी को कुछ पता रहेगा तो आप लोग बोल सकते हो. मटेरियल और टेक्सचर के अंदर क्या डिफरेंस है? या फिर कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है? Any idea? Anyone? Okay, texture is like a pattern. Okay, huh. And what is the material? Material is object. No. Material defines the optical properties of an object. A texture is a pattern that breaks up within. नहीं नहीं, ये मेरे को डाउनलोडेड नहीं चाहिए कुछ भी. ठीक है, आपको जो याद है ना, मतलब आपको जो लगता है कि ये सब मीनिंग हो सकता है वैसे चाहिए. ये ऐसे कॉपी पेस्ट करके नहीं चलेगा हमें. ये ऐसे तो फिर मैं डायरेक्टली आपको नोट्स दे देता हूँ और बोलो पढ़ो, चलेगा क्या आपको? You have to explore your own things. ठीक है, you can take the reference but you have to explore your own things. बताओ चलो, what is texture and what is a material? Texture is like a मटेरियल हा एक एलिमेंट असतो. काय काय? मटेरियल हा एक एलिमेंट असतो, म्हणजे एक्झाम्पल गोल्ड, स्टील. ओके, हा हा, दॅट इज अ मटेरियल. हे मटेरियल झाले. आणि टेक्स्चर म्हणजे त्याच्या अप्पर सरफेसला थोडंसं शाईन किंवा वुडन पॅटर्न, तो टेक्स्चर असतात. ओके ओके, ठीक है, गुड. Material is the type of thing which shows the property of an object. ठीक है, मटेरियल मतलब क्या रहेगा? अभी मटेरियल फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया? वुड. वुड इज अ मटेरियल. ठीक है, वुड मैंने झाड़ से कट करके या फिर कहीं से लेके छोटा सा एक बॉक्स बनाया है वुड का, और उसके ऊपर जब मैं कोई ऐसे पैटर्न लगाऊंगा या फिर कुछ एक इमेज वगैरह प्लेस करूंगा, तो मटेरियल के ऊपर आई विल प्लेस द टेक्सचर. ठीक है, so just keep in mind, on the materials we place textures. The same way in this software also, first you need to apply a material on the selected object. ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन से टाइप के मटेरियल से बना होगा, you have to decide that. ठीक है, अभी ये जो रहता है मैक्सिमम प्लास्टिक का वगैरह बना हुआ रहता है. ठीक है, प्लास्टिक कुछ कुछ स्टील का भी रहता है, कुछ फाइबर का रहता है. ठीक है, so depends upon the material which you select. मतलब जो क्वालिटी का आपको खरीदना है उसके हिसाब से आप लोग खरीद सकते हो. दे क्रिएट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल टाइप्स. ठीक है, सो फॉर अप्लाइंग द मटेरियल आपको क्या करना है? यू हैव टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, लॉन्ग प्रेस राइट क्लिक. ठीक है, आपको दिख रहा है सॉफ्टवेयर? जस्ट अ सेकंड. ठीक है, लॉन्ग प्रेस राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट. इसको ऐसे ही प्रेस करके रखना है और नीचे नीचे जाना है. On the last part or the last section you will get different types of material option. ठीक है, assign new material, assign favorite material, assign existing material. ठीक है, remove material overrides or material attributes. ठीक है, so these are different types of options used for adding materials. ठीक है, first आपको क्या करना है? You have to add a material on that and after that you have to add texture. ठीक है, वैसा एक ऑप्शन है. और अगर आपको सेपरेटली सेपरेट फेसेस के ऊपर मटेरियल अप्लाई करना है, then what you have to do, you have to first select those faces or select that part, shift press and select it. ठीक है, after that right click on it and assign a new material. ठीक है, so these are the options.
first what I will do, I will just apply a basic material on this single material. Right click, assign new material. ठीक है, उसके ऊपर ले जाके छोड़ देना है आपको. Now next we have different types of material types. जिस टाइप का मटेरियल आपको चाहिए you can select and you can apply. ठीक है, अभी इसके अंदर जो है कुछ कुछ मटेरियल्स के अंदर रेडीमेड फंक्शंस रहते हैं, कुछ कुछ मटेरियल्स आपको मॉडिफाई करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द settings. ठीक है, you have to change the properties of those material to get the desired output. So in that way, first select this material. I will select Lambert. अभी इसमें भी टाइप्स है अलग अलग. ठीक है, ब्लिन मटेरियल मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा शाइन दिख रहा है. थोड़ा सा जूम करके देख लो आप लोग, मटेरियल के अंदर आपको डिफरेंस दिखेगा. जस्ट जूम दिस पार्ट, इतना पार्ट जो है आप थोड़ा सा जूम करके देख लो. आपके फोन के अंदर ऐसे जूम का ऑप्शन रहता है. ठीक है, जस्ट जूम इट एंड जस्ट सी व्हाट आर मटेरियल्स और कैसे कैसे मटेरियल्स आपको दिख रहे हैं. ठीक है, ब्लिन के ऊपर जो है आपको थोड़ा सा शाइन दिखेगा. दिख रहा है, शाइन दिख रहा है सबको ब्लिन के ऊपर. उसके नीचे जो है लैम्बर्ट. ठीक है, लैम्बर्ट इज अ लिटिल बिट रफ. ठीक है, थोड़ा सा रफ सरफेस रहेगा लैम्बर्ट का. नेक्स्ट लेयर्ड शेडर. ठीक है, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स ऑन दैट. नेक्स्ट इज फॉन्ग. अभी ब्लिन से ज्यादा फॉन्ग के अंदर थोड़ा सा शाइन ज्यादा है. ठीक है, फॉन्ग. उसके बाद में सेकंड टाइप आता है उसका ही फॉन्ग ई करके. फॉन्ग ई के अंदर भी सेम शाइन है बट देयर इज अ स्प्रेड इन द शाइन. ठीक है, स्प्रेड प्लस अ लिटिल बिट रफनेस. नेक्स्ट वन इज अ रैम्प शेडर. ठीक है, अगर कलरफुल मटेरियल्स आपको अप्लाई करने हैं, मतलब ग्रेडियंट मटेरियल अगर आपको अप्लाई करना है, देन यू हैव टू यूज द रैम्प शेडर. नेक्स्ट इज अ सरफेस शेडर. कंप्लीट सरफेस आपका ब्लैकआउट हो जाएगा या फिर एक पूरा ऐसे पार्ट आपका ब्लैक दिखेगा, दैट इज अ सरफेस शेडर. नेक्स्ट इज अ यूज बैकग्राउंड. यूज बैकग्राउंड मटेरियल मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखेगा आपका. So in this, what we have to do, we have to select one material. I will select a blend material. Okay. After selecting, on the right hand side in the attributes editor, this is the attribute editor. Okay. You will get different types of attributes, common material attributes. Okay. Common material attributes. In this, you have the colors, transparency, ambience, incandescence, bump, diffuse, translucence, translucent depth, and translucent focus. Okay. Next is specular shading. Specular is nothing but shining. Okay. Specular shading मतलब shining. Eccentricities, specular roll-off, specular color, reflectivity, reflected color. ठीक है, ये सारे ऑप्शंस है. अभी यहाँ पे जो कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये टर्म्स आपने पहले कभी सुने होंगे फिजिक्स के अंदर. ठीक है, आप सब लोग साइंस बैकग्राउंड से हो, सो आपको फिजिक्स एक सब्जेक्ट था, उसके अंदर यू विल हैव ऑल ऑफ दिस टर्म्स. ठीक है, मतलब आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा है. ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या रहता है, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? opacity of the object. ओपेसिटी, हाँ. और उसके बाद में क्या है, एम्बियंस. व्हाट इज एम्बियंस? एम्बियंस इज द फील ऑफ द कलर. ठीक है, एम्बियंट कलर, थोड़ा सा जो उसके अंदर शाइन रहता है और उसके अंदर थोड़ा जो इफेक्ट रहता है, दैट इज एम्बियंस. ठीक है, इनकैंडिसेंस, उसके अंदर जो रफ पार्ट, जो कवरिंग पार्ट रहता है, कवरिंग पार्ट ऑफ द कलर, इट डिफाइंस द इनकैंडिसेंस. ठीक है, बम्प मैप. बम्प मैप जो रहता है, बम्प मैप डिफाइंस द डेप्थ. ठीक है, उसके अंदर एक डेप्थ क्रिएट करना रहेगा आपको मटेरियल से ही, सो यू हैव टू असाइन अ बम्प मैप. डिफ्यूजन लेवल. डिफ्यूजन इज नथिंग बट इफ यू अप्लाई अ कलर, तो वो कलर का कितना पार्ट विजिबल रहना चाहिए या फिर कितना इफेक्ट दिखना चाहिए, दैट इज अ डिफ्यूज लेवल. ट्रांसलूसेंस. Transparency or translucence. Translucence increases and decreases the shininess in the material. ठीक है, translucence का depth, translucence का focus. So these are different types of properties which you need for the material. तो यहाँ पे क्या है, see this is a plain material. You can also name this. ठीक है, Rubik's cube. This is a complete Rubik's cube material.
कलर के ऊपर क्लिक करोगे यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कलर पैनल. ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद different types of colors है which you can assign for the material. ठीक है, I will assign a black color. ठीक है, done. अभी मटेरियल के अंदर आपको अगर देखना रहेगा तो यू हैव द शॉर्टकट ऑफ 6. ठीक है, अगर कुछ मटेरियल आपने अप्लाई किया है तो यू हैव टू सी द इफेक्ट, सो यू हैव टू अप्लाई 6. राइट क्लिक करना है, मटेरियल एट्रीब्यूट्स, प्लस 6. now it will be applicable and you can see the visible part of this material. ठीक है, देखो ब्लिंड मटेरियल के अंदर कैसे शाइन आ रहा है. देयर आर सम डिफॉल्ट लाइट्स इन दिस सॉफ्टवेयर. ठीक है, डिफॉल्ट लाइट्स, उसके ऊपर ये आपको ऐसे इफेक्ट दिखेगा ब्लिंड मटेरियल. आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, right click, go to face selection. I will select the faces and I will apply another material to this. Okay, assign new material, clean only. Okay, and I will rename this to red color. Okay, I will go to colors and change it to red. Assign new material. Okay, see, colors yellow. Right click, assign new material. ब्लिन लैम्बर्ट जो भी आपको अप्लाई करना है आपके हिसाब से यू कैन अप्लाई. तो कलर्स रेड, येलो, ग्रीन. assign new material, blend, blue. assign new material. ये सर मटेरियल को रीनेम करना है. just rename all of these materials according to the colors. white भी रहता है. assign new material, blend, color. यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करता है. ठीक है, okay, so this is the Rubik's cube model which I have created. इसके नीचे एक सरफेस असाइन कर दो.
I have got this surface. Press F to focus on the object. Select the object and press F. Okay. Control D, duplicate. Rotate it. Control D, duplicate. Go to the back view. Rotate it. -45 degrees. So you have to place all of this on the surface. Control D. What I'm doing, I'm just setting up a presentation of a single object. ठीक है, एक single object का presentation I'm just setting up that. ठीक है, so it will look good. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू. आप जैसे इसको प्रेजेंट करोगे एक सिंगल ऑब्जेक्ट को ये सारे टूल्स यूज करके, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रेजेंटेशन. ठीक है, नाउ हाउ टू मेक एन आउटपुट ऑफ दिस. ठीक है, ये आपको क्या दिखाया था मैंने, रेंडरिंग के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था. व्हाट इज अ रेंडरिंग, क्या है, व्हाट इज रेंडरिंग, बताओ, याद है किसी को? Output. आउटपुट, प्रोसेसिंग ऑफ एन आउटपुट. ठीक है, रेंडरिंग इज नथिंग बट प्रोसेसिंग ऑफ एन आउटपुट. आउटपुट अगर आप लोग सिर्फ आउटपुट बोलोगे तो इट विल नॉट बी दैट मच डेफिनेट. ठीक है, आउटपुट बोलोगे तो आउटपुट के टाइप्स रहते हैं, जेपीजी, वीडियो, मतलब इमेज टाइप्स, वीडियो टाइप्स, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट्स. बट प्रोसेसिंग ऑफ एन आउटपुट इज रेंडरिंग. ठीक है, वर्ड्स मैटर इन दिस टाइप. Processing of an output is rendering. I have to process the output of this created objects. ठीक है, so what I will do, यहाँ पे जो है कुछ tools है. ठीक है, these are some of the tools for rendering. What I will do, I will just go for these are display render settings. ठीक है, ये वाला टूल है, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा एक बार, you will get this type of window. ठीक है, render settings window. Now rendering is the processing of output. Output अगर आपको प्रोसेस करना है, you will have different types of
options. ठीक है. Now in the first you have the render layer. Okay, master layer, this is the default layer which we create all of the objects. There are different types of layers रहेंगे आपके, so you can select that layer. Next is render using Arnold renderer. ठीक है. Also I have explained you what is a renderer. ठीक है. Renderer uses the some of the settings of its own to process the output. ठीक है. There are different types of render engines. ठीक है. Arnold is a render engine which I am explaining you, that is Arnold. Now in the exam आपको mental ray render engine, ठीक है, you have to select the mental ray render engine, you have to select the mental ray lights, and each render engine have its own elements. ठीक है. अगर आप लोग Arnold select करते हो, आप लोग mental ray select करते हो, you have to select the mental ray. ठीक है. आपको इसके अंदर mental ray select करना है, but this is default. ठीक है. 2018 के अंदर या फिर 16 17 के आगे उन्होंने आर्नोल्ड डाला है सॉफ्टवेयर के अंदर. सो दिस इज द डिफॉल्ट. दे हैव रिमूव्ड द मेंटल रे, दे हैव मॉडिफाइड इट टू आर्नोल्ड रेंडर. ठीक है. सो आर्नोल्ड रेंडर हैज इट्स ओन लाइट्स, हैज इट्स ओन एलिमेंट्स, हैज इट्स ओन मटेरियल्स, टेक्सचर्स एंड ऑल. ठीक है. सो आपको आर्नोल्ड के मटेरियल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, आर्नोल्ड के टेक्सचर्स अप्लाई करने पड़ते हैं, आर्नोल्ड के लाइट्स अप्लाई करने हैं, तभी जाके आपको आर्नोल्ड रेंडरर से वो डिजायर्ड आउटपुट मिल सकता है. ठीक है. If you do not use the selected or specified materials or specified lights, then you will not get the required output. ठीक है. So in this, I will just select a basic thing. ठीक है. If you drag this, scroll करोगे, you have different types of render settings. ठीक है. Image format कौन सा चाहिए आपको? You have to select the image format. See, JPEG, I will need the JPEG, PNG, TIFF, PXR, Maya, Maya to Arnold schedule. ठीक है. Different types of formats है. In this you have to select the JPEG file. इसके बाद ड्रैग करोगे, these are the option, these all of the options are off. ये वीडियो के लिए यूज होते हैं, so आपको बाद में बताऊंगा मैं वीडियो कैसे निकालते हैं. फर्स्ट you have to make an image output. ठीक है. नीचे आओगे तो आपको मिलेगा इमेज साइज. ठीक है. you will have different types of sizes. यहाँ पे presets है, रेडीमेड presets है. इसको अगर क्लिक करोगे you will have a drop down list of different types of presets. ठीक है. 640 into 480, these are ratios. ठीक है. pixel ratios, width and height ratio of the rendered image. ठीक है. You have to process a 2D rendered image out of this 3D scene. ठीक है. 640 into 480 करूंगा तो width and height ratio आएगा. Size of units in pixels, inches, जो size में चाहिए आपको, आप लोग उसके हिसाब से निकाल सकते हो. Next, resolution is pixels per inch. ठीक है. 1 इंच के अंदर आपको कितना पिक्सल्स चाहिए, that you have to decide it. ठीक है. In the resolution, so I will just keep a default. ठीक है. Normal रखता हूँ मैं, ज्यादा बड़ा नहीं रखता हूँ. Resolution I will adjust to 150. ठीक है. 72 रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इतना क्वालिटी कम आएगा. जितना ज्यादा रेजोल्यूशन रहेगा उतना ज्यादा क्वालिटी अच्छा आएगा. बट डोंट डू दैट. आई विल कीप 1000 रेजोल्यूशन, 2000 रेजोल्यूशन. वैसे मत करो, उतना आपका टाइम वेस्ट होगा फिर रेंडरिंग का. ठीक है. अगर फाइनल आउटपुट आपको वो रेजोल्यूशन में चाहिए तभी आप लोग वो प्रोसेस कर सकते हो. बट फॉर प्रैक्टिसिंग एंड फॉर स्टडिंग you should use a standard resolution or low resolution. ठीक है. So just close this. I have applied the settings. ठीक है. Settings इस बार अप्लाई हो गए तो नीचे के आप close type option आएगा. You have to close it. Now in this you will have the render the current frame option. So click करोगे तो automatically it will get rendered. ठीक है. जैसे कि आपको मैंने बताया था कि for Arnold you have to use its own Arnold lights, own materials and own everything. ठीक है. So in this what I will have to do, I will have to add lights. ठीक है. So go for Arnold lights. In the menu bar, go for Arnold's lights, and in this you can apply different types of lights. ठीक है. First I will add and show you the sky dome light. एक single light मैं आपको दिखाता हूँ. I have added a sky dome light. ठीक है. Sky dome is nothing but see this type of sphere. मतलब एक sky create होता है उसके साइड में, आपके ऑब्जेक्ट के साइड में. Now I will render this. See. Okay, you will get this type of realistic output. यहाँ पे आपको जो shadows वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है, shadows, reflections and all, this is a blend material. मतलब वो reflect कर रहा है each and every objects, each and every terms. ठीक है. यहाँ पे जो काफी white light हो गया है,
मतलब स्काईडोम, उसके अभी सेटिंग्स है बहुत सारे, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, ठीक है। सो आई जस्ट रिमेंबर हाउ यू कैन रेंडर योर इमेज, ठीक है। अगर 2014 को यूज कर रहा है देन नो नीड ऑफ एडिंग द स्काईडोम डायरेक्टली, अगर आप मेंटल रेस रेंडर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट आ जाएगा। बट फॉर आर्नोल्ड रेंडरर इट रिक्वायर्स आर्नोल्ड लाइट्स एंड मटेरियल्स, ठीक है। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ योर क्रिएटेड मॉडल। अब इसको सेव कैसे करना है, यू हैव टू राइट क्लिक ऑन द फाइल एंड सेव इमेज, ठीक है। और यहाँ से फाइल में भी जा सकते हो, फाइल एंड सेव इमेज, ठीक है। सेव इट ऑन द डेस्कटॉप, नेम इट, ठीक है। रूबिक्स क्यूब जेपीईजी फॉर्मेट में चाहिए मुझे, ठीक है। सेव फॉर डेस्कटॉप, दिस इज योर फाइनल इमेज रेंडर्ड आउटपुट, ठीक है। ऐसे आपका एक रेंडर आउटपुट मिल गया है आपको, ठीक है, with shadows and materials. So this type of objects you can create using Maya Arnold Renderer, ठीक है। Clear with this? Anyone have any doubts? या फिर से रिपीट करो इसको, समझ गया सबको या नहीं समझा है? फिर से रिपीट करना है या फिर से बताना है? समजलं, ठीक आहे. बाकीच्यांना सगळ्यांना समजलं का? ज्यांना नाही समजलं त्यांनी मेसेज टाका. समझ गया? अच्छा ठीक है, चलो। काफी होशियार लोग हैं, लेकिन जब भी आप लोग सामने करने के लिए लोगे ना, तो आपको पता चलेगा अरे यार ये यहाँ पे कुछ तो मिसिंग हो गया है, ठीक है। सर हाँ एक विचारायचं होतं सर, तुम्ही मागाशी म्हणले की प्रत्येक लेअरला एक नाव द्यायचं आपण मटेरियल अप्लाय करताना, हाँ हाँ तर आपण त्याला नाव नाही दिलं ना आपण विसरून गेलो तर परत त्याला सिलेक्ट करून आपण त्याला रिनेम नाही करू शकत? करू शकतो ना, पण तुला माहिती पाहिजे की कुठलं मटेरियल येतं. हा तेच विचारायचं होतं सर, रिनेम करायचं कसं करायचं? हा आता याच्यामध्ये आहे ना, आपण विसरून गेलो, आम्ही पण विसरून गेलो, नाहीतर मी फास्ट फास्ट मध्ये गेलोय. आता हे येलो कलर आहे, ठीक आहे. मी काय करणार, राईट क्लिक, सिलेक्ट फेस, ठीक आहे. फेस सिलेक्ट केलं, राईट क्लिक करून मटेरियल ऍट्रिब्यूट्स मध्ये गेलो, ठीक आहे. आता इथं काय लॅम्बर्ट 2 हे नाव आहे, मी याला काय करतो, येलो रिमेंबर. हे रिमेंबर, हे लक्षात ठेवा, राईट क्लिक करून तुम्हाला मटेरियल ऍट्रिब्यूट्स मध्ये जायचं आहे जर का तुम्हाला काही चेंज पाहिजे असेल तर, ठीक आहे. आणि तुम्ही याच्यामध्ये चेंज पण करू शकता. मटेरियल एकदा सिलेक्ट केलं आणि ते एक सिंगल मटेरियल तुम्ही जेवढ्या ठिकाणी अप्लाय केलंय ते सगळ्या ह्याच्यावरती चेंज होईल. काय ब्राऊन कलर वगैरे दिलं मी, लिटिल बिट ब्लूइश, थोड्या वेळाने त्याचा आउटपुट दिसेल तुम्हाला, ठीक आहे. इट टेक टाइम्स टू प्रोसेस, रेंडरिंग मध्ये दिसेल. रेंडर काढतो, सी, ठीक आहे. येल्लोच्या ठिकाणी हे मटेरियल अप्लाय झालं आता. The final output will be always be visible in the rendered output, ठीक आहे. फायनली जसं दिसणार आहे ते डायरेक्टली तुम्हाला रेंडर आउटपुट मध्ये दिसेल. सगळे कलर्स तुम्ही चेंज करू शकता असं राईट क्लिक करून, ठीक आहे. हे ऑप्शन लक्षात ठेवा, कुठले ऑप्शन कायसाठी यूज करायचे, ठीक है. हाँ हाँ अपलोड तो करने वाला ही हूँ मैं, ठीक है. बट जस्ट रिमेम्बर दिस कि कैसे मैंने क्रिएट किया है. कैसे यूट्यूब के ऊपर अगर आप देख लोगे, नहीं तो बाद में देखेंगे हम लोग, वैसे करोगे ना तो फिर आपको सीखने ही नहीं जमेगा. अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो फिर यूट्यूब के ऊपर. तो इसलिए यू हैव टू बी अटेंटिव इन द सेशंस, यू हैव टू memorize and you have to remember everything on this only online platform, ठीक है. So this is a part of creating objects and how to process it.
सर I will just delete this. हाँ, सर अगर एक बॉक्स का कलर चेंज करना हो तो, एक बॉक्स का मतलब एक पीस का। एक पीस का, तो अगर नया मटेरियल डाल दो फिर उसके ऊपर, उतना पीस सिलेक्ट करो और नया मटेरियल डाल के कलर चेंज कर दो, सिंपल। ओके सर। ठीक है। सो इन दिस व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या याद रखना है कि आप मटेरियल कैसे अप्लाई कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सिलेक्ट दिस सिलेंडर, आई हैव क्रिएटेड दिस सिलेंडर, इसके ऊपर क्या करता हूँ मैं, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, विल अप्लाई स्ट्रॉन्ग मटेरियल, और इसका एक कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, येलो कलर, मटेरियल एट्रीब्यूट्स येलो नहीं चाहिए, असाइन इट टू रेड कलर। ठीक है, रेड कलर असाइन किया है अभी इसको। नाउ अगर मुझे इसका सिंगल सिंगल ऐसे अल्टरनेट भी सिलेक्ट करना रहेगा कलर चेंज करने के लिए, रोटेट इट, सिलेक्ट अल्टरनेट, आपको शॉर्टकट्स मालूम रहने चाहिए। ठीक है, मैं आपको जैसे स्टार्टिंग से सिखा रहा था। ठीक है, so that for that thing I have given a maximum time to you. ठीक है, maximum time I was uh, teaching you the same things so that you can remember all of those options. ठीक है, because those options were very important for you all. ठीक है, to learn this software. ज्यादा करके मैंने आपको बेसिक्स के ऊपर फोकस करने के लिए बोला है। ठीक है, काफी सारे लोग रहते हैं दे वांट टू लर्न एडवांस। ठीक है, लेकिन अगर आपका बेसिक्स ही क्लियर नहीं रहेगा तो आप लोग एडवांस लर्न करके कुछ फायदा ही नहीं होगा आपका। आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हो, यू कैन जस्ट मेमोराइज और रट्टा मार के जितना सिखाया है उतना ही कर सकते हो। अगर आपको कुछ नया चीज देते हैं तो यू गेट कंफ्यूज्ड। आई विल जस्ट टेल यू दैट डोंट मेमोराइज दिस, जस्ट रिमेंबर दिस एंड शो योर ओन क्रिएटिविटी। और इसको जो है एक क्रिएटिव वे से देखो। ठीक है, ईच एंड एवरी टूल, और वो टूल यूज करके आप लोग और क्या क्या क्रिएट कर सकते हो। जस्ट मैंने दिखाया रूबिक्स क्यूब बनाना है आपको, तो वैसे नहीं करना है, क्रिएट योर ओन थिंग्स। ठीक है, व्हाट आई विल डू, आई हैव सिलेक्टेड मल्टीपल sides. Now I will extrude this, add thickness, see, add thickness, दोनों साइड से थिकनेस ऐड हो गया है। इसको ऑफसेट देना है, ऑफसेट दे सकते हो। ठीक है, ऑफसेट भी दे दिया है। नेक्स्ट, राइट क्लिक, assign new material, blend material, change the color, change to green, apply this. Okay, see. I haven't used any new tool. I have just used what I have shown you. ठीक है, आपको जो मैंने सिखाया है टूल, उसी टूल्स को यूज करके I have created this type of shape. ठीक है, so I haven't memorized it. I have just remembered the tools and its use. ठीक है, and I have the practice of working with the software. ठीक है, मैंने सॉफ्टवेयर को इतना काम किया है सॉफ्टवेयर के ऊपर कि now it is friendly to me. Software is friendly to me. It has become my friend. ठीक है, so उसी टाइप से मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ जो जो चाहिए। आई कैन जूम आउट, जूम इन, आई कैन रोटेट, आई कैन पैन। ठीक है, इट वेरी इजीली। तो अगर आपको बोला कि ये सारे सेपरेट सेपरेट एजेस आपको सिलेक्ट करने हैं या फिर इन बिटवीन के जो फेस सिलेक्ट करने हैं, तो आप लोग यहाँ से ये सिलेक्ट करते बैठोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे, यहीं से ऐसे जाओगे, फिर किधर तो साइड चेंज करोगे। बट ऐसे रोटेट करना है, सिलेक्ट करना है, रोटेट करना है, सिलेक्ट करना है, रोटेट सिलेक्ट, रोटेट सिलेक्ट, रोटेट सिलेक्ट, रोटेट सिलेक्ट। ऊपर के भी ऐसे ही, सिलेक्ट 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 एंड सिलेक्ट। नीचे के भी वैसे ही। यू हैव टू रिमेम्बर, आपको आउटपुट याद रखना है कि मुझे ऐसे टाइप का आउटपुट चाहिए सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट। ठीक है, रेड ग्रीन एंड नाउ आई विल असाइन ब्लू कलर। ठीक है, आरजीबी कॉम्बिनेशन डाल रहा हूँ। असाइन न्यू मटेरियल, होंगी द कलर ब्लू कलर। ओके, सी,
this type of shape is ready. इसका अरेंजमेंट करना रहेगा. Select the plane, assign a surface. ठीक है, रेंडर करने से पहले आफ्टर प्रोसेस, बिफोर प्रोसेसिंग द आउटपुट, यू हैव टू असाइन अ सरफेस टू दिस. ठीक है, ताकि उसके शैडोज वगैरह जो है, रियल लाइफ में कैसे रहता है, शैडोज के ऊपर ही कोई भी एक, या फिर सरफेस के ऊपर ही कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे अलाइन होता है, या फिर वो सेट होता है फेस के सरफेस के ऊपर. तो वैसे ही आपको रियल वर्ल्ड के बारे में सोच के ही आपको इसको प्रोसेस करना है. ठीक है, assign the surface. Next, go to Arnold, lights, Skydome light. Okay, now I will what do, I will just render this. Okay, so this is my rendered output with shadows and lights. If you have a good system, ठीक है, मतलब पीसी अगर आपका अच्छा रहेगा, रैम वगैरह आपने अच्छे से लिया रहेगा, वर्क स्टेशन रहेगा आपके पास, तो आप लोग डायरेक्टली लाइव रेंडर भी कर सकते हो. लाइव रेंडरिंग, यू कैन स्विच ऑन टू लाइव रेंडरिंग. ठीक है, मतलब आउटपुट आपको कैसे दिखना चाहिए. तो आर्नोल्ड रेंडर. ठीक है, रेंडर के ऊपर क्लिक कर दोगे. इफ यू मूव दिस, सी, बट इट्स कंज्यूम्स योर रैम. ठीक है, ज्यादा रैम कंज्यूम होता है इससे. डायरेक्ट लाइव रेंडर हो रहा है विथ लाइट्स एंड शैडोज. फाइनल आउटपुट आपका कैसे दिखने वाला है, इट विल जस्ट प्रोसेस दैट. 2018 वर्जन. ठीक है, इसके अंदर आर्नोल्ड अवेलेबल है. यू विल हैव दिस मेंटल रे, आपको ऑन करके फिर उसको प्ले करना पड़ेगा. ठीक है, दैट आल्सो आई विल शो यू आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, clear with this. Now using all of these tools, what you have to do, okay, I will also show you one of a good tool. ठीक है, एक अच्छे टूल बताता हूँ मैं आपको. I created this box. और आपको अगर राइट साइड में जाओगे, you have different types of settings. ठीक है, these are the phone settings. ठीक है, character settings, ये आपको मैं बात में बताता हूँ. This is an attribute editor. ठीक है, different types of attributes of the object. This is settings, tool settings. ठीक है, tool settings, these are the tools. इसके settings चाहिए रहेंगे, so you have to click on this. ठीक है, उसके आइकॉन्स देखो, आप लोग जूम करो इतने पार्ट को. यहाँ पे देखो, एक ऐसा हथौड़ा दिख रहा है आपको. ठीक है, हथौड़ा रहेगा तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स दिख रहे हैं, सेटिंग्स. ठीक है, हथौड़ा ऐसे दिखेगा तो यहाँ द टूल्स. ठीक है, टूल सेटिंग्स. टूल सेटिंग्स, उसके लेफ्ट साइड के अंदर आपको क्या दिख रहा है, एट्रीब्यूट्स. जो हम लोग एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, ऐसे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स. दीज आर द एट्रीब्यूट्स. दिस इज अ कैरेक्टर. ठीक है, कैरेक्टर, एंड दिस इज अ चैनल बॉक्स, मतलब शो और हाइड मॉडलिंग टूल किट. दिस इज ऑल्सो अ टूल किट. यहाँ पे जाओगे तो यू विल हैव चैनल बॉक्स. ठीक है, see these are different types of channel box के options. You will select the object, there are different types of object options. ठीक है, if you have to close this, you just close the tool settings. On and off. ठीक है, toggle, this is a toggle, shortcut toggle, on and off. राइट साइड में भी आपको दिखेगा चैनल बॉक्स, एट्रीब्यूट एडिटर एंड द ह्यूमन आई. ठीक है, ये वाला ऑप्शन अभी यूज नहीं होगा आपको. जस्ट यूज द चैनल बॉक्स एंड द एट्रीब्यूट एडिटर. ठीक है, इसे आपको यूज करना है. Now from this inputs, I can add the subdivisions group. ठीक है, ये आपको दिखाया था मैंने, how to add divisions and how to edit those divisions. यहाँ से आप लोग divisions ऐड करते हो, but ये क्या होता है, it applies to the basic object. ठीक है, basic object को apply होता है. If I have done some of the editing in this, editing ऐड किया मैंने. Now if I open the polycube, depth, height and width. ठीक है, I am adjusting this. And if I increase the width, देखो, if I increase the subdivisions now,
इट विल नॉट वर्क इन अ गुड वे, ठीक है, बिकॉज एडिटिंग उसके ऊपर ऑलरेडी हो गया है। इसके बाद में अगर आप सब डिविजन ऐड करते हो सो इट विल नॉट टेक दोज सेटिंग्स, ठीक है। एक बार आपने एडिटिंग चालू कर दिया तो डोंट अगेन स्विच फॉर दीज ऑप्शंस, ठीक है। अगर आपको सब डिविजन ऐड करने हैं और इसके अंदर आई विल शो यू वन ऑप्शन, गो टू मेश टूल्स, ठीक है। मेश टूल्स इन 2018 सॉफ्टवेयर, अगर इसे डाउन रहेगा तो गो टू एडिट मेश, ठीक है। एडिट मेश के अंदर जाओगे या फिर मेश के अंदर जाओगे तो विल गेट द इंसर्ट एज लूप टूल, ठीक है। इंसर्ट एज लूप, अब इसका मीनिंग क्या रहेगा मेरे को बता सकते हो? इस टूल का मीनिंग पढ़ो पूरा क्या लिखा है वहां पे और बता मुझे क्या रह सकता है ये, या फिर इसका फंक्शन कैसे रह सकता है। उस वर्ड्स का मीनिंग बताओ मुझे पहले, वो टूल का वर्ड जो है आपको पढ़ो, वो टूल के वर्ड क्या है सो, और उसका मीनिंग बताओ मुझे। जूम करो वहां पे जो हाईलाइट किया है मैंने। एजिस पे आउटलाइन टाइप लूप्स बनाता है, ओके। एजिस पर आउटलाइन टाइप लूप्स क्रिएट होते हैं। लूप्स मतलब क्या? इट कैन फॉर्म अ लूप ऑफ एज, ओके गुड विवेक, इट कैन फॉर्म लूप ऑफ एज, ठीक है। मीन्स इट कैन इंसर्ट an edge loop on the object. And now what is a loop? closed path. Closed path, ठीक है। A path which is in a continuity and it is closed from all of the ways, ठीक है, पूरे साइड से। यहाँ पे क्या है, यू हैव टू प्रेस इंसर्ट एज लूप, ठीक है। इसको अगर क्लिक करोगे आप तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ एरो, ठीक है। आपका एरो चेंज हो गया है, देखो अभी यहाँ पे जूम करके देखो उस एरो के ऊपर, द एरो हैज चेंज्ड, सॉरी, ठीक है, द एरो हैज चेंज्ड, नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंसर्टिंग एज लूप्स, ठीक है। अभी अगर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हो एजेस के ऊपर, सी यहाँ पे एक लूप ऐड हो गया है, मतलब राउंड राउंड जो चीज रहता है लूप यहाँ से ऐड किया है, ठीक है। अगर ऐसे ऐड करना है सो यू हैव टू सिलेक्ट दिस एजेस, यहाँ पे भी ऐड करना है तो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ आपका एक वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का जैसे रहता है डायग्राम, वैसे कुछ क्रिएट हुआ है, ठीक है। वन पॉइंट और टू पॉइंट पर्सपेक्टिव है, टू पॉइंट, ठीक है। दीज आर टू एरोज, टू लाइंस, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ इंसर्ट एज लूप, यू हैव टू रिमेंबर द यूज। रट्टा मत मारो कि मैंने एज लूप बॉक्स के ऊपर ही ऐड किया है। यू कैन इंसर्ट एज लूप्स ऑन एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, like select this object, I have created this object, okay, and it only adds loops where it will show, मतलब अगर आप उसको लूप्स क्रिएट करने के लिए उतने एजेस मिलते हैं तभी वो लूप्स क्रिएट करता है, नहीं तो फिर नहीं करता है। यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे ये कनेक्टेड है, यहाँ पे these edges are not separated, these edges are connected with one single point, so you cannot assign a loop on this, ठीक है। कनेक्टेड एजेस के ऊपर लूप आप लोग ऐड नहीं कर सकते हो, so for that first you need to insert a single
एज इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड कर दिया, देखो मैंने इसको। अभी यहाँ पे जो है यू हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस, यहाँ पे आप लोग लूप क्रिएट कर सकते हो बट ऊपर नहीं कर सकते। इसको टू दिस इंसर्ट एज लूप, यहाँ पे हाउ मेनी लूप्स यू कैन ऐड, बट ऊपर नहीं होंगे बिकॉज इट इज नॉट इन द कंटिन्यूटी, इट इज मर्जिंग ऑन अ सिंगल वर्टेक्स, ठीक है। सो ये भी आपको, you have to remember this also options, you cannot apply edge loops on the merged vertices or connection vertices, ठीक है। So you have to remember that it can form loop of edge, ठीक है, it can form a loop of edge on the connected vertices, unconnected vertices, ठीक है। connected vertices के ऊपर, वो connected edges के ऊपर it cannot add loops, ठीक है। अब ये सारे टूल्स यूज करके आप लोग बहुत सारे मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे, ठीक है। जस्ट क्रिएट एंड शो यू वन सिंगल मॉडल। ठीक है, सिलेंडर क्रिएट किया है। गो फॉर द इनपुट्स, मुझे क्या चाहिए, आई डोंट वांट सब डिविजन ऑन द कैप्स, ठीक है। कैप के सब डिविजन मैंने ऑफ किए हैं। नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल राइट क्लिक ऑन द फेस, सिलेक्ट द फेस, एक्सट्रूड, प्रेस डब्ल्यू, एक्सट्रूड हो गया है वो, ठीक है। एक्सट्रूड प्लस डब्ल्यू, मूव दिस एंड स्केल दिस, again press extrude, press W, move this। एक बार आपने एक्सट्रूड क्लिक कर दिया, इट इज ऑलरेडी एक्सट्रूडेड, ठीक है। 10 बार उसको एक्सट्रूड मत करो, तो कभी कभी क्या होता है, ये वाला फेस मुझे एक्सट्रूड करना है, आई प्रेस एक्सट्रूड, और क्या करते हैं हम लोग, साइड में क्लिक करते हैं। आपको मैं बार बार स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि अवॉइड एक्स्ट्रा क्लिक्स व्हाइल यूजिंग एनी ऑफ द टूल्स, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लिक्स आपको अवॉइड करने हैं। अभी साइड में क्लिक कर दिया मैंने, बट दैट पार्ट इज ऑलरेडी एक्सट्रूडेड, ठीक है। कैसे देख सकते हो आप लोग, अगर आप लोग सिलेक्ट करके उसको मूव करोगे, देखो और ये वाला इस तरह से, ये वाला फेस था, सी देखो उतना पार्ट ऑलरेडी एक्सट्रूड किया हुआ है। सो जस्ट रिमेंबर दैट डू नॉट क्लिक अननेसेसरीली, ठीक है। एक बार आपने टूल अप्लाई कर दिया तो उसके फंक्शन जब ये ओपन होते हैं तो बार बार वही एक्सट्रूड एक्सट्रूड अप्लाई नहीं करना है आपको, वही फंक्शन रिपीट नहीं करना है, ठीक है। एक्सट्रूड, एक्सट्रूड, स्केल, मूव, एक्सट्रूड, स्केल, एक्सट्रूड, स्केल, एक्सट्रूड, मूव, मूव एंड स्केल। एक्सट्रूड, मूव एंड स्केल। ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है ना, दिस इज अ ग्लास ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे जो है आई कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा हार्ड सरफेसेस दिख रहे हैं। सो इफ यू वांट टू मेक दिस ऑब्जेक्ट इन अ स्मूथ वे, इफ यू हैव टू स्मूथ दिस एजेस, ठीक है, इसके बीच में अगर आपको स्मूथनेस लाना है तो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड प्रेस 3, ठीक है। आपको 4, 5, 6 एंड 7 शॉर्टकट्स बताए हैं मैंने। नाउ इज द टाइम फॉर द अनदर शॉर्टकट, दैट इज 3, ठीक है। 3 प्रेस करोगे, इट विल स्मूथ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट विल अप्लाई स्मूथनेस ऑन द डिजायर्ड एजेस, ठीक है। जो एजेस आपने सिलेक्ट किए हैं उस एजेस के ऊपर इट विल ऐड द स्मूथनेस, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2।
ठीक है, एंड 1 इज फॉर हार्डनेस। ठीक है, अगर फिर से हार्ड सेक्शन में आना है आपको, सो 1 इज द शॉर्टकट टू गेट इट बैक टू हार्ड सरफेस। ठीक है, विदाउट स्मूथनेस, अगर आपको स्मूथनेस ऑफ करना है तो यू हैव टू प्रेस 1 फॉर हार्ड सरफेस, 3 फॉर स्मूथ सरफेस, and 2 is for smooth plus hard referring. See, now it is smooth but is referred to the hard edges. मतलब hard surface होने के बाद उसके edges कहाँ पे है, it will show you. ठीक है, 1, 2 and 3, 1 is for hard, 2 is for hard and smooth, and 3 is for smooth. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे 7 शॉर्टकट्स हो गए। समझ में आया ये शॉर्टकट्स? यस सर। Okay. 1 2 3 4 5 6, 1 is for hard surface, 2 is for hard plus smooth, 3 is for smooth, 4 is for wireframe, 5 is for shaded, 6 is for textures, and 7 is for lights. ठीक है, 1 hard surface, 2 hard plus smooth, 3 smooth, 4 wireframe, 5 shaded, 6 textures if applied, 7 lights if applied. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 and 7. Toggle between the shortcuts. इसको क्या करना है आपको, you have to right click, assign new material, shininess, E, material attributes, color should be white. Okay, and now I will increase the transparency. ठीक है, क्या किया है मैंने, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज की है सिर्फ। I will add Arnold lights, shadow light. Just render and see the output how it looks. See, glass object. ठीक है, ऐसे ग्लास ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा इसमें। रेंडर, ठीक है, done. These are the basic terms of adding materials, adding textures, adding lights, and rendering the given object. ठीक है, clear with these terms everyone? पक्का, कुछ डाउट नहीं है? ओके, सो जिस चीज के पास सिस्टम्स है, जस्ट प्रैक्टिस, रेस्ट ऑफ द मेमोराइज। प्रैक्टिस करने के बाद जो आपको आउटपुट आता है, जस्ट सेंड मी। ठीक है, इमेज आउटपुट भेजो, काफी सारे लोगों ने अच्छा अच्छा आउटपुट भेजे हैं मुझे। ठीक है, गुड फॉर देम। रेस्ट ऑफ देम प्लीज प्रैक्टिस एंड सेंड मी द आउटपुट्स। ठीक है, सो जस्ट ask me any of the doubts if you have. Till then I will mark your attendance or save your attendance. सर हाँ बोल। मला एक विचारायचं होतं, जे आपण ऑब्जेक्ट सेव्ह केले आता ते आपण दुसऱ्या सॉफ्टवेअर मध्ये यूज करू शकतो का? हाँ यूज करू शकतो ना, दॅट इज इम्पोर्टिंग अँड एक्सपोर्टिंग ऑप्शन. ठीक आहे, आपण But 3D मध्ये that- सेव्ह केलं तर ते 3D मध्ये दुसऱ्या ह्याच्यात दिसेल का? हा तेच आहे ना, त्याच्यामध्ये कसं आहे, 3Dचं जर का सॉफ्टवेअर असेल आणि ते सपोर्ट करत असेल हे सगळे टूल्स, तर ओपन होईल, नाहीतर नाही होणार. ओके सर, ठीक आहे. अनदर सॉफ्टवेयर शुड सपोर्ट ऑल ऑफ दिस टूल्स. जैसे कि अगर ऑटोडेस्क के अगर सॉफ्टवेयर कंसिडर करोगे आप लोग, तो ऑटोडेस्क के अंदर यू कैन स्प्लिट ऑन एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर, एनी ऑफ द 3D सॉफ्टवेयर, ऑटोडेस्क माया, मैक्स, मडबॉक्स, ऑटोकैड और बहुत सारे ऑटोकैड, ऑटोडेस्क के जितने भी सॉफ्टवेयर रहेंगे, 3D मेशर या फिर वो ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं ऑटोडेस्क के,
all of the tools and all of the options are supported by all of the softwares. ठीक है, मतलब Autodesk ने वैसे वो डिजाइन किया है कि सब सॉफ्टवेयर्स के एलिमेंट्स आप लोग दूसरे सॉफ्टवेयर में भी अप्लाई करके यूज कर सकते हो. सो इट हैज मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ इट टूल्स. ठीक है, अगर आप लोग दूसरी कंपनी के सॉफ्टवेयर ले लोगे, अगर उसके अंदर ऑप्शंस प्रेजेंट नहीं है ये वाले सॉफ्टवेयर के, if you have created using this software, then it will not open those elements and those tools or those objects, even if that is a 3D software. ठीक है, अगर 3D सॉफ्टवेयर रहेगा and if it supports the tools or the exporting options from these softwares, then only it can open those elements. ठीक है, open those things. ठीक है, anything else? Yes, Blender supports it. ठीक है, you have to export it in OBJ format, OBJ or FBX format. Okay, chalo. See you in the next session. Till then, practice and let me know if you have any doubts. Chalo, bye. आपल्यापैकी रूम मध्ये कोण आहे? अभ्या, काय बोल आपल्यापैकी रूम साठी कोण कोण आहे अजून? इकडे जेवढे आहेत त्यामध्ये संकेत एज टूल ऍड केलं काय म्हणजे त्याचं हे काय? कळालं? अरे इन्सर्ट एज टूल जेव्हा इन्सर्ट केलं तेव्हा त्याच्यानंतर काय होते म्हणजे ऑब्जेक्ट मध्ये काय आपण हे करू शकतो? त्याच्यामध्ये ना समज कोणते एजेस त्याला स्मूथ करायचे. हा मग तेवढा पार्ट Design फक्त edges smooth हे करू कर. शकतो. हा, तू जेवढे एजेस सिलेक्ट करशील ना तेवढे स्मूथ कर. हा हा. पण ते आपण इथे पण आधी पण ऍडजस्ट करू शकतो ना, म्हणजे जे ऍक्सेस आहेत त्यात पण आपण डिवाइड करू शकतो ना एका हा, करू ऑब्जेक्टच्या एका शकतो, पार्टला. पण हा. त्यानंतर पूर्ण ऑब्जेक्ट कम्प्लीट झाले ना त्यानंतर हा. मल्टिपल टाइम्स एकाच वेळेस एजेस शेअर करतात सर्व. ओके ओके. इथे जेव्हा इथे तू आधी इन्सर्ट एज करत टूल तू केल्यावर आधी करत प्रेस गेला ना केल्यावर तुला तिकडे ना. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नाही येणार. हा हा. म्हणजे एक वेळेस जास्त एक वेळेस कमी, नंतर तू एकदा मल्टिपल टाइम्स केलं ना मग तो हा. पूर्ण तू कोऑर्डिनेट करतो एकमेकांशी. ओके ओके. हम्म. ठीक आहे. चल लेक्चर काढतोय. हो हो चालेल. चल बाय. अभिषेक भाई.